tubercular peritonitis is a form of the abdominal tuberculosis caused by the Mycobacterium tuberculosis infection affecting the peritoneum, the membrane lining the abdominal cavity. It is one of the extrapulmonary manifestation of the tuberculosis. तो ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस क्या है? फॉर्म ऑफ द एब्डोमिनल टीबी का एक फॉर्म है जिसकी जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो रहा है, अफेक्टिंग द पेरिटोनियम एंड द केविटी को भी अफेक्ट कर रहा है. इटियोलॉजी क्या है और पैथोफिजियोलॉजी? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में द इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑफन स्प्रेडिंग फ्रॉम द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बट ऑल्सो बाय द डायरेक्ट इंजेक्शन. या तो डायरेक्ट इंजेक्शन हो गया या तो हिमाटोजेनस स्प्रेड या फिर लिम्फेटिक डाइसेमिनेशन. पेरिटोनियल इन्वॉल्वमेंट द बैक्टीरिया टिपिकली इन्फेक्ट द पेरिटोनियम resulting in the inflammation, ascites and sometimes the formation of the fibrous adhesion and the granulomas. Types of the tubercular peritonitis: weight type, fibrotic type and tubercular peritonitis. weight type में ascites type में the most common form characterized by the abdominal distension due to the accumulation of the fluid. fibrotic type में the peritoneum become thick and adherent and leading to the intestinal obstruction or the palpable mass. tuberculous peritonitis with the intestinal perforation तो rare but serious complication include the intestinal rupture leading to the peritonitis. clinical feature क्या मिलेगा? abdominal pain, discomfort often diffuse और colicky type का, abdominal distension due to ascites, low grade fever and night sweat, loss of appetite and weight loss, nausea, vomiting, palpable mass in the abdomen. in fibrotic type, positive peritoneal signs such as the tenderness, rebound tenderness in severe cases, sign of the TB elsewhere, lungs, lymph node and may also be present. डायग्नोसिस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड डिस्टेंशन मिलेगी, है ना. एब्डोमिनल टेंडरनेस और डिस्टेंशन. फ्लूइड वेव में एसाइटिक टाइप मिलेगा, पल्पेबल में एब्डोमिनल मास, फाइब्रोटिक टाइप देखने को मिलेगा. इमेजिंग स्टडीज़ में अल्ट्रासाउंड शोज द असाइटिस, पेरिटोनियल थिकनिंग एंड द लिम्फ एडेनोपैथी. इमेजिंग स्टडीज़ में अल्ट्रासाउंड में शोज द एसाइटिस, पेरिटोनियल थिकनिंग एंड लिम्फ एडेनोपैथी. सीटी स्कैन में कैन आइडेंटिफाई द फाइब्रोटिक मासेस, कैल्सिफिकेशन एंड एक्सटेंसिव पेरिटोनियल इन्वॉल्वमेंट. पेरासेंटेसिस में एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस में एसाइटिक फ्लूइड इज यूजुअली एक्सुडेटिव विद द हाई प्रोटीन, लो ग्लूकोज एंड elevated white cell counts. acid fast bacilli may be detected in the fluid and PCR for the mycobacterium TB in the ascitic fluid or biopsy specimen. biopsy करेंगे तो histopathology of the peritoneum may show the satiating granulomas which are the characteristic of the TB. tuberculin skin test करेंगे and chest x-ray में show the lung involvement भी मिल सकता है. ट्रीटमेंट में एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देंगे. स्टैंडर्ड एंटी टीबी रेजिमेन इज़ द गिवन टू 6 to 9 month. इंटेंसिव फेज में रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड वगैरह, और कंटिन्यूएशन फेज में रिफाम्पिसिन देंगे. सपोर्टिव मेजर्स में ड्रेनेज ऑफ द एसाइटिक फ्लूइड विद द सीवियर एंड कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड electrolyte balance and in cases of the intestinal perforation and obstruction surgical intervention may be needed. इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है. कैलिकार्ब यूजफुल इन द ascitic type with swollen abdomen and pain in the abdomen aggravated by the cold and motion, weakness, fatigue and chronic debility, suited for the individual with the tendency to the tuberculosis, है ना. ट्यूबरकुलिनम में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर द इंडिविजुअल विद द ट्यूबरकुलर डायथिसिस, नाइट स्वेट, फीवर, कफ, malaise and useful in the chronic TB and associated complication like the peritonitis. Bovista देंगे indicated when there is abdominal distension, ascites and palpable mass, often used when the symptom worse with the mental stress and exertion. Hypersulfuricus calcareum for cases with the pus formation, inflammation in the abdomen. sulfur देंगे. mercury solubilus arsenicum, lycopodium clavitum.